then I will request you to accept for your encouragement. I hope this kind attention on my book and that. मुझे जी से इतनी भी उम्मीद है ये और बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ उनकी इंस्टीट्यूट के लोग As Chief Justice Sahab has already said all words, so I will. So therefore, you have to do well in your business, in your vocation, and stay foolish is to keep your minds open. बहुत बहुत बधाई मिस्टर लोकरंजन आपको, अच्छा आपने काम किया। 3 साल पहले जब मैं बिहार में आया तो सबसे पहले मैंने खोज की कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखा, उसका क्या प्रमाण है, किसने लिखा। तो बहुत खोज की तो मुझे पता लगा कि वो उसका अनुवाद जो है वो अनफॉर्चुनेटली बिहार में नहीं हुआ, वो मैसूर में। कड़ी में ये जोड़ रहा हूँ कि आज बिहार के लोग बिहार के बारे में जागरूक हो गए हैं और देखना शुरू कर दिया। बहुत बहुत अच्छी बात है और बधाई देता हूँ मैं लोकरंजन को। इसलिए भी आपने उम्मीद करता हूँ पुराने ग्रंथ हैं, कानून को लेके बहुत लोगों ने लिखा है। चाहे वो शेरशाह सूरी की जस्टिस डिलीवरी सिस्टम हो, चाहे वो अर्थशास्त्र में जो लिखा हो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को लेकर न्याय प्रणाली कैसी होनी चाहिए, इस तरीके से भारत को, पूरे देश को एक आइडिया दिया बिहार के लोगों ने और उसी तरीके से मॉडर्न डे में ऐसा समझता हूँ कि लोग जी काम करेंगे। मुझे जी से इतनी भी उम्मीद है कि और बधाई देना चाहता हूँ कि यहाँ इनकी इंस्टीट्यूट के लोग अच्छे हैं, वो केवल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं इस इंस्टीट्यूट में, पटना को छोड़ के बाहर इसलिए नहीं कर रहे हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे वो एक सिलेबस को क्रैक करके या पढ़ के कहीं न कहीं किसी एग्जामिनेशन में बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है इनकी इंस्टीट्यूट इसका मुझे ज्ञान हुआ जस्टिस राजीव से कि इन्होंने एक मिशन ये ली है सब कि किस तरीके से हमारा जो यूथ है उसको चैनलाइज करना है और उसकी जो एनर्जीज हैं वो देश को आगे ले जाने में, देश का अच्छा नागरिक हो, ये साथ साथ उन्होंने ये मिशन संकल्प लिया है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप आलोक जी। I also compliment those who have been undertaking training in this institute, and I understand some of them are our colleagues in the justice delivery system of Bihar. They have done wonders. I'm also proud of the fact that what has been done here, it has checked the migration of intellectual migration from the state of Bihar. So people of Bihar are getting opportunity, students of Bihar are getting opportunity of having A-class education in whatever field they aspire for in Bihar. With these words, I again thank the organizers of this program and wish them great success in the future. And I also thank my brothers for their valuable time. Thank you very much. Which are required to be followed. Nonetheless, it's an event which is being organized by him for the first time, I believe,
and they're also in Patna. So these may not matter. But the fact of the matter is that we follow a protocol that once the Chief Justice speaks, nobody else speaks. But with the permission of the Chief Justice, I must not discourage you all. You see, when I got this invite of launch of the BEAR Acts and a book called Constitution, two things struck me. It was a very pleasant note that struck my mind. One, the name of the institute called Ambition. Now, ambition is something which everybody should have. And the second, the head office of this institute, which is in Mukherjee Nagar. It brings a lot of pleasant memories because all the students of Delhi University must have visited the Mukherjee Nagar once in a life, or every day perhaps. So that was the place where we all nurtured our ambition. Now, ambition, see, I'll be as brief as possible. Ambition, you see, is acquired. Ambition is given shape by acquiring knowledge. How do you acquire knowledge? By reading books. There could be no other better window than books. And the attempt of Alok to write BEAR Acts, that is something really great. Because, I don't know the audience. I can see some familiar faces and I can see some budding lawyers, students. So there is always a misnomer in the mind of young lawyers that if you go for commentaries, perhaps the judge would get impressed. That's a great misnomer. Now, when we were lawyers, the first tendency was to pick up a commentary and speak from that commentary before a judge. That should be avoided. BEAR Act is something, it's bare to the bones. The name itself would suggest it's BEAR Act. So when Alok said that he is going to write something, he has written something hidden there in the BEAR Act, and he would explain things from here and there, well, that is not the purpose of BEAR Act. That would become a commentary. So either it has to be a BEAR Act, or your commentary, or your short notes with the BEAR Act. But anyway, this was a wonderful attempt. Something has been written in Hindi, and as I flipped through the pages of the idea of Constitution, I found that it contained most of the decisions of the Supreme Court which have been rendered only lately over burning issues like the collegium system and right to privacy and other rights, the ever-expanding frontiers of decision making. So what makes me feel very happy, and I'm rushing through because all of us have to go, is that instead of choosing a place like Delhi to have this launch, you have come to Patna. So we give you all our support, my blessings to all of you. And I personally believe that if you go through BEAR Acts, and if you read between the lines of the BEAR Act, perhaps you do better as a lawyer, as a student, as an examinee, and you'll find that no commentary would be better than your own understanding of the law when you go through the BEAR Acts. So I would end this talk by saying that you see, you should have that quest in you, and therefore the name ambition. Ambition to do well in life, ambition to write more, ambition to learn more. Now, this is what Steve Jobs once said, and all of you must have heard his speech, the best speech ever given. So he ends his talk by saying that you remain hungry, you remain foolish. Now, what he meant by this, you remain hungry so that you earn more money to get you more food of various kinds. So therefore, you have to do well in your business, in your vocation. And stay foolish is to keep your minds open. The window to your mind should be open, unless at the moment you get a feeling that you know everything, perhaps you close everything for you. So this is what I will also repeat. You don't need to be as successful as Steve Jobs to advise people, because as I always tell my friends, that if you are appreciating Lata Mangeshkar, you need not be a good singer yourself. So this is what Steve Jobs told you, and this is what I am repeating, that you stay foolish, stay hungry. Thank you. आज यहाँ 13 दिसंबर 2022 को
कौटिल्य दरबार में ये मौर्य होटल में एम्बिशन पब्लिकेशंस के बेयर एक्ट जो CRPC, IPC, एविडेंस और साक्ष्य अधिनियम जो हिंदी में हमने बेयर एक्ट निकाला है और एन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसी किताबों का विमोचन हुआ। हमारे माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस संजय करोल साहब और हमारे अन्य पटना हाई कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं श्री आशुतोष कुमार, श्री राजीव रंजन प्रसाद, श्री मधुरेश प्रसाद, श्री मोहित कुमार शाह जी, श्री जस्टिस पार्थ सारथी, श्री सतवत वर्मा एंड श्री अरुण कुमार झा के द्वारा इन बेयर एक्ट का और पुस्तक का विमोचन हुआ है यहाँ पर। आज हमारे मुख्य न्यायमूर्ति ने ये बात बड़ी गंभीरता से कही कि इस देश में उन बच्चों को भी हक है शिक्षा प्राप्त करने का जिनके पास संसाधन नहीं है। तो उस बात पर विशेष करके एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट और व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि मेरी भी स्थिति बचपन में वही थी। हम लोगों को लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एजुकेशन पर काम करना चाहिए। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे बिहार जैसे राज्य के बच्चों को जिनके पास उतने संसाधन नहीं, कैसे हम आगे लेकर के जाएंगे। इसी क्रम में हमने बेयर एक्ट भी पब्लिश किया है, क्योंकि बेयर एक्ट बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है और अब हिंदी में भी बेयर एक्ट ला रहे हैं जो बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध है, क्योंकि कोचिंग की शायद फीस बच्चे न दे पाएँ, बट ये बेयर एक्ट से वो सारगर्भित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सारगर्भित ज्ञान देने के लिए हमने बेयर एक्ट का चयन किया कि कम कीमत में ही बेयर एक्ट बनाते हैं और कम कीमत में उन चीज़ों को पब्लिश करते हैं और घर गांव तक इसको पहुंचाते हैं। हमारे माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार जी ने भी इस बात पर बल दिया कि भाई बिहार के बच्चों के लिए और उन पिछड़े राज्यों के बच्चों के लिए आप क्या करेंगे। तो उसमें यही कर सकते हैं आप कि उनको अच्छी अध्ययन सामग्री या ऑनलाइन की क्लासेस दे सकते हैं। उसके साथ साथ न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद जी ने हमारे प्रयास को सराहा। उन्होंने इसकी बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि अच्छा प्रयास है और ये जारी रहना चाहिए। इस प्रयास से बिहार जैसे राज्य को और यहाँ के विद्यार्थियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। अन्य न्यायाधीशों ने भी इसी बात पर बल दिया कि बेयर एक्ट जैसी किताबों की और बेयर एक्ट जैसी चीज़ों की बहुत भूमिका है, तो इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए। खास करके जस्टिस सतवत वर्मा जी ने कहा कि भाई बेयर एक्ट में खास करके नोट्स और नए केसेस लाने होंगे, तो हम लोग इसका भी प्रयास करेंगे। हम लोग विधि विषय के क्षेत्र में हैं, लॉ पढ़ाते हैं दिल्ली में एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के नाम से, तो हम इसीलिए एम्बिशन पब्लिकेशंस बनाए कि भाई हम बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों के बच्चों को कैसे अपनी बात पहुंचाएं कम कीमत पे। तो अपनी बात कम कीमत पर पहुंचाने के लिए पहले हमने अंग्रेजी में बेयर एक्ट निकाला और अब हिंदी में बेयर एक्ट निकाल रहे हैं। चूँकि मैं भी बिहार का एक विद्यार्थी रहा हूँ तो मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, समझता हूँ कि हम जब बच्चे होते हैं तो हमारे अभिभावक के पास शायद उतना संसाधन नहीं होता है कि वो हमें बहुत उच्च स्तर की शिक्षा दे पाए और हम बहुत बड़ी संस्था में पढ़ पाए। मैं खुद इन चीज़ों से गुजरा हूँ। मैं खुद ओपन विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, जो सुन के शायद आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि आज मैं देश की एक प्रीमियर संस्था में पढ़ाता हूँ। मैं वहाँ प्रधानाध्यापक हूँ, तो आपको भी सुन के आश्चर्य लग रहा होगा। और मैं बिहार का ही पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी माध्यम का छात्र हूँ, फिर पटना के BN कॉलेज से पढ़ा। तो मैं जानता हूँ कि मुझे इसमें कितनी उतार चढ़ाव देखना पड़ा, कितनी परेशानी हुई। 10-10 रुपये के लिए लोग तरस जाते हैं। तो ऐसे में लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एजुकेशन का बहुत महत्व है। तो हमारा आगे आने वाले दिनों में बेयर एक्ट के अलावा लो कॉस्ट बुक्स भी निकालने का प्रयास रहेगा। हम वो भी चाहेंगे, हम इस पर विशेष रूप से काम करें ताकि जो विद्यार्थी क्लासेस नहीं भी ले पाता है वो भी इस चीज़ को करे। और मैं एक खास बात आज आपसे साझा करता हूँ कि मैंने प्रण किया है कि मैं अपने जन्मदिन के दिन 13 मार्च 2023 को बिहार और भारत के उन हर विद्यार्थी को जो हिंदी माध्यम से खास करके पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि अंग्रेजी माध्यम के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है, विल बी डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर देम एज वेल, बट हिंदी माध्यम के छात्रों को हम एक कुछ दिनों के लिए ही सही एक प्रयास करें, 6 महीने साल भर का उनको मुफ्त विधि शिक्षा दें। तो 13 मार्च को वो भी लॉन्च होगा। मैं आज ही आपको इस बात की घोषणा कर देता हूँ, आप इंतज़ार करिएगा, हमसे जुड़िएगा, हमसे सवाल पूछिएगा और मैं आपको मुफ्त शिक्षा देने का ये वादा पटना में देता हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं का हूँ, मैं भी बिहार हूँ, मुझ में भी वो गुण है जो बिहारियों में होता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बिहार के बच्चे और हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे भी आगे आएँ। सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन ना मिले, हिंदी के बच्चों को भी क्वालिटी एजुकेशन मिले। जी।
really beg your pardon. Rank 83, Ishant Ranjan. Please go. 151, Mr. Nadeem Ahmed. Shambhavi Vats. And I would now request Mr.